Good evening, Ash. Good evening, Harsh. Good evening, Chirag. Good evening, Usman. Yes, happy Raksha Bandhan to everyone over here. Yeah. So before starting the session, beta, just give me a thumbs up in the chat box that the audio and visuals are perfectly fine, so that I can start with the session. Yeah. Today I will be discussing Dr. Sushant. Good evening, beta. Yeah. Hazira. Good evening. Osama. Good evening. Gursevak. Hello. 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 Chalo. Before starting with the session, just give me a thumbs up in the chat box, beta, that the audio and visuals are perfectly fine, so that I can start with the session. Yeah, chalo. Perfect. Manish, Ruki, very good. Ash, Chirag, chalo. Very good, very good. I think the audio and visuals are fine. So today, beta, we are going to discuss the osteology of the tibia. Okay. We already know the tibia. It is a bone of the leg. Okay. It is a bone of the leg. मैंने आप लोग को पहले ही बताया था. You already know beta, for example, yeah, just see over here, this is the, you already know this is the knee joint. Okay, the knee joint. And yeah, this is the ankle joint, beta. Okay, this is the ankle joint. Ankle joint. Yeah, this is the knee joint and this is the ankle joint, and from the knee joint to the ankle joint, beta, yes, this is the region of the leg. Okay, it is the leg region, and this bone, beta, it is the tibia. It is the tibia, and the bone parallel to it, it is the fibula. It is the fibula. Now, I have a question to everyone in the chat box. I have a question to everyone in the chat box, beta. If suppose this is the midline of the body, okay? If suppose it is the midline of the body, which bone of the leg will be medial and which bone of the leg will be lateral? Which bone of the leg will be medial and which bone of the leg will be lateral? I want answers from everyone in the chat box. Yes, बेटा आप खुद देखिए. यस हर्ष बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो. हाँ हर्ष, जीनल, रिया वेरी गुड बेटा. मनीष, ऐश, चिराग वेरी गुड बेटा. यू ऑलरेडी नो बेटा बॉडी का मिड लाइन है. बॉडी के मिड लाइन के क्लोज, if you can see, closer to the midline of the body, we have the tibia bone. Okay, we have the tibia bone which is closer to the midline of the body, and the fibula, it is away from the midline as compared to tibia. So tibia is more closer to midline. Tibia is more closer to midline. So beta, tibia, it is called as the medial bone of the leg. Okay, it is the medial bone of the leg, and fibula, it is the lateral bone of the leg. It is the lateral bone of the leg. Yes, everyone is right. Hazira, Harsh, Vishnu, innocent girl, very good. Manisha, very good, beta. So let us just write about the type. You already know, beta. We have already discussed yesterday that yeah, tibia, it is a typical long bone. Okay, it is a typical long bone. Okay, when I say typical long bone, beta, you already know it shows cartilaginous ossification. Okay, cartilaginous ossification, yeah, means it is formed from the cartilage, right? Or cartilaginous ossification, it is formed from, okay, it is formed from which cartilage, beta? Chalo, tell me your answers in the comment section. Meanwhile, I will just write enchondral. Enchondral, n means inside, chondro word is basically for the cartilage, chondrocytes. Okay, chondroblast, chondro word cartilage के लिए, osteo word is for the bone, right? So it shows enchondral ossification. Yes, it shows enchondral ossification. Yes. So remember, beta, it is a typical long bone and it shows enchondral ossification. Now, when I say typical long bone, it is comprising of, okay, it consists of the upper end. Okay, it consists of the upper end. We have the shaft region and we have the lower end. All the typical long bones. Yes, Genal Patel, very good beta. It is the hyaline cartilage. It is the hyaline cartilage. Yes. So a long bone basically consists of three parts: upper end, shaft, and lower end. Upper end, shaft, and lower end. Now, beta, site. Site, you already know. I have already told you it is the medial bone of the leg. Okay, it is the medial bone of the leg.
It is the medial bone of the leg. Okay. Now, can you tell me this tibia? It is forming a joint above. Okay. With which bone, beta? It is forming a joint above with which bone? Yes. With which bone? Okay. And it is forming a joint below with which bone? Okay. I want the name of the bones, beta. नहीं बेटा, पटेला के साथ नहीं बनाता है. मैंने उस टाइम पे भी बताया था. इवन इन द लेक्चर्स आल्सो आई हैव टोल्ड यू द टिबिया आर्टिकुलेट्स विद फीमर ओनली. इट डज नॉट आर्टिकुलेट्स विद द पटेला वाला पार्ट. राइट? यस, इट इज द फीमर बेटा. जीनल, वेरी गुड. हर्ष, वेरी गुड. Basic lecture में when I have started like the lower limb anatomy beta, I have already told you a true knee joint, it is basically between the femur and the tibia. Okay, a true knee joint, it is basically between the femur and the tibia. Yes, Riya Singh, नीचे की तरफ होता है talus. We have one of the bone that is called as talus. Okay, one of the tarsal bones in the legs. Okay, how many tarsal bones are there in the leg? Sorry, foot. चलो, how many tarsal bones are there in the foot? फटाफट से नंबर बता दो, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, मुझे भी पता चले तुम लोगों ने कितना पढ़ा. यस जीनल, वेरी गुड बेटा, इट इज द talus. Yes, Amira, very good beta, it is the 7, very good. Manisha, Harsh, Sushant, Nikita, Chirag, Riya, very good beta, very good. Ash, Jinal, very good. So remember beta, it is the medial bone of the leg. Okay, so it is the medial bone of the leg and it articulates. Remember, it articulates above. Articulates means it will form joint above with femur. Okay, and distally, or yeah, below it will, yeah, below, and it articulates below with talus. Okay, articulates below with the talus. Yes, and remember beta, it is also forming a joint with the fibula. It is also forming a joint with the fibula, as you can already see this. And okay, it is also forming a joint with the fibula and it articulates laterally with fibula. Now this is something which I have already discussed. Now tibia articulates with fibula, okay, at how many places? Tibia articulates with fibula at how many places, and the name of the joint that it will be formed. The name of that joint. Okay. फटाफट से बता दो. It articulates laterally with the fibula. Okay, जल्दी से बता दो. Yes, Chinal, very good beta. It articulates with the fibula at two places. Yes, above and below. Yes, so it will form the, yes, superior tibiofibular joint. Very good beta. Usman, very good. Everyone is right. Riya, Kriti, Harsh, Ash, Jinal, very good. Manisha, very good. It is a plain synovial joint, and below it is the inferior tibiofibular joint. Inferior tibiofibular joint. आपको ये पता ही है, आप लोगों ने देखा ही हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव द पिक्चर विद मी, ओके, आई डोंट हैव. Yes, you can see beta, this is, you already know, this is the tibia. This is the tibia. Okay, and this is fibula. This is fibula. So tibia and fibula are, tibia is joining with fibula laterally at upper part, and it is joining with fibula at lower end also. So this is called as superior tibiofibular joint, and this is called as the inferior tibiofibular joint. Inferior tibiofibular joint. So yes, that is about the that is about the, yes, the site. It is the medial bone of the leg, and it is forming approximately 3 joints. Above, it is joining with the femur to form the knee joint. Below, with the talus to form the ankle joint. Inferiorly to the talus, and laterally beta, it is joining to the fibula at 2 points, above and below. Above, it is forming superior tibiofibular joint, and below it is forming the inferior tibiofibular joint. Yes, everyone is right beta, everyone is right. Now, what is the function beta? Okay.
I have a question to everyone over here in the chat box. Which bone does not participate in the formation of knee joint? Which bone does not participate in the formation of the knee joint? So yes, tell me the answer. Tibia alone receives the weight. चलो ऑप्शंस दे देता हूं, ऑप्शंस दे देता हूं। पटेला भी है, फिबुला भी है, या टैलस भी है। चलो टैलस तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। बिटवीन फिबुला एंड पटेला, चलो बिटवीन फिबुला एंड पटेला। नाउ आंसर द क्वेश्चन। अगर दोनों में से एक मार्क करना हो तो क्या मार्क करोगे? दोनों में से अगर एक मार्क करना हो, आउट ऑफ टू इफ यू हैव टू मार्क वन ऑप्शन, देन व्हाट यू विल मार्क गाइस? टेल मी। यस, Ash says, yeah, Ruki, Fibula, Manish, Fibula, Riya, Amira, Chirag, Sushant. चलो बेटा, very good. Tibia alone receives the weight, from femur and transmits it to the foot, okay. And yeah, beta, okay, just see over here, everyone, just see over here, just try to see over here, beta. You already know that. Now let's just clear your concept, beta, over here. When I say knee joint, beta, when I say knee joint, so knee joint, it is formed by two things, okay. If I say tibia and femur, okay, you already know this is the femur bone and this is the tibia and this is the fibula, okay, and this is patella, which is present in the lower part of the knee joint, sorry, which is present in the lower end of the femur, right? Tibia and femur actually forms the true knee joint, whereas when we say femur and patella, yes, it will also form the knee joint, but indirect knee joint. It is not direct, it is indirect knee joint, okay. Now knee joint, it is formed from tibia, femur and patella. The bone which is not attached to the femur, it is the fibula, beta. Fibula, it is neither not attached to the patella nor to the femur. So yes, fibula never participates in the knee joint. Fibula never participates in the knee joint, beta. Yes. Okay. Now when I say tibia alone receives the weight, whatever weight, okay, from the femur will come. How it will move down to the leg? With which bone, beta? It will move down to the leg with the help of tibia only. Because femur, it is not connected with fibula. All the force will pass from the tibia only to the foot, okay. जितना भी force आ रहा है ऊपर से बेटा, it will pass from the femur bone to the tibia because they are directly connected with each other, right, forming the knee joint. Fibula will not be able to transfer the weight, okay, from the femur. It is only the tibia. Okay, I hope this is clear to each one of you. Just give me a thumbs up in the chat box if this concept is clear to each one of you. Yeah. Chal. Ash, very good, beta. Very good. Type, sight, and function done. Very good. Riya Singh, Harsh, very good. Very good, beta. Jinal, Kriti, very good. Ruki, very good. Very good, beta. चलिए चलिए बाकी सब भी थम्स अप दे दिया करो so that I believe that I am not teaching the walls over here. Yeah, students are still there to see. Now coming on to the structure of the tibia. Dr. Sushant, yes. Now beta, this is the tibia bone. Now this is the anterior view. And this is the posterior view. Okay, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है. अगर ये एंटीरियर है बेटा तो ये बॉडी का मीडियल साइड है, ओके, और ये टिबिया का क्या हो जाएगा, लेटरल साइड हो जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन
टिबिया इज मीडियल, तो ये आप आगे से यू आर वॉचिंग द टिबिया फ्रॉम फ्रंट, सो यू ऑलरेडी नो दैट दिस टिबिया विल बी गोइंग टू this will be the medial side, right? This will be the medial side in the anterior view, right? And in the posterior view also, this will be the medial side and this will be the lateral side, right? Now beta, you can see that the tibia, it is divided into, okay, it is divided into upper end, it is divided into upper end. We have a long part of the bone that is called as the shaft, that is called as the shaft, and we have the lower part of the bone, which is actually the lower end of the bone, lower end of the bone. So yeah, the tibia, it is बेटा आमिरा, हमेशा जब भी हम लोग देखते हैं कोई भी बोन, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द पेशेंट, राइट और लेफ्ट इन एनाटॉमी बेटा, इट इज डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट. अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, वो कह रहा है ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही सेइंग आई एम हैविंग पेन इन द राइट लेग. तो आप पेशेंट के हिसाब से राइट लेग देखोगे ना, अपना राइट तो नहीं देखोगे. अपना राइट देखोगे तो इट विल बिकम पेशेंट्स लेफ्ट, तो फिर उल्टे पैर का ऑपरेशन कर दोगे. अगेन इन द नेक्स्ट डे इट विल बी हेडलाइंस कि डॉक्टर ने दूसरे पैर का ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन किसी और पैर का होना था और हो किसी और पैर का गया. तो ऑलवेज कीप इन माइंड राइट एंड लेफ्ट, इट इज डिसाइडेड टू विद रिस्पेक्ट टू द पेशेंट. ओके, इट इज डिसाइडेड विद रिस्पेक्ट टू द पेशेंट. तो ये मैं पेशेंट का टिबिया देख रहा हूँ बेटा, सामने मेरे सामने पेशेंट बैठा हुआ है, तो ये पेशेंट के हिसाब से बॉडी का मिड लाइन उसका ये होगा. मेरे सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू मी, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और उसके बॉडी का मिड लाइन ये है. तो ये वाली साइड मीडियल हो गई, ये वाली साइड लेटरल हो गई. तो पेशेंट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं. इज इट क्लियर आमिरा? इज इट क्लियर बेटा आमिरा? जस्ट गिव मी अ थम्स अप बेटा इफ इट इज क्लियर टू यू. या if it is clear to you beta, just give me a thumbs up in the chat box. Right now, coming on to the side determination beta. Side determination का मतलब होता है, if suppose a bone is given to you, if suppose a bone is given to you and you have to decide whether it is right or left, whether you have to decide whether it is right or left beta. So you can see that the upper end over here, the upper end beta, the upper end is large. The upper end is large. I will be discussing each part in detail. No need to worry. Upper end is large. Okay, it is very broad. Okay, and it has medial condyle and it has lateral condyle. देखो medial side पर condyle होगा, rounded projection of the bone. Okay, expanded portion of the bone. मैंने तुम लोग को कल भी बताया था. For example, this is a bone बेटा. For example, this is a bone and bone is expanded at the end. Okay, bone is expanded at the end. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Condyle. Okay, expanded portion of the bone. क्या बोलते हैं? Expanded portion of the bone. Expanded portion of the bone. Right? It is called as condyle. Now, condyle towards the medial side will be medial condyle and towards the lateral side it will be lateral condyle. So upper end is large and remember beta, and carry two condyles, and the name of two condyles you already know, the medial condyle and the lateral condyle. NCLC I have just written medial condyle and the lateral condyle. Okay, if you see the lower end beta, if you just concentrate on the lower end, the lower end is smaller as compared to upper end. Upper end थोड़ा सा ज़्यादा broad है, lower end is comparatively smaller. So you have to remember beta, the lower end it is smaller. Okay, the lower end it is smaller. Okay, and there is a projection of the bone beta over here that is called as, it is towards the medial side. It is called as medial malleolus. Medial malleolus. Now medial side पे malleolus का मतलब है it is a process of the bone. For example बेटा, पूरी बॉडी है आपकी और आपकी बॉडी से कोई पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ है, for example this arm, so that is called as processes of the bone. बोन की एक पूरी बॉडी होती है और बोन का एक छोटा सा हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, that is called as processes of the bone, and that is something which is termed as malleolus over here. And beta, remember it is towards the medial side, so that is why it is called as medial malleolus. That is why it is called as the medial malleolus. So remember the lower end it is smaller. Okay,
The lower end it is smaller and it contains medial malleolus. मीडियल साइड पे आपको मेल्यूलस देखने को मिलेगा, ओके। और मीडियल मेल्यूलस हमेशा कहां प्रेजेंट होता है बेटा? नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में इट इज ऑलवेज प्रेजेंट मीडियली, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट मीडियली, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा वी हैव अ टिब्रोसिटी इन द अपर एंड, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी बेटा। ये जो आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड एज द टिबियल ट्यूबरोसिटी, ओके। This is called as the tibial tuberosity or tibial tuberosity. Okay. अब मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है, tibial tuberosity is present. Okay. Options are anterior, posterior, medial, lateral. Tibial tuberosity it is present anterior, posterior, medial, lateral. जल्दी से बताओ देख के पिक्चर, फटाफट से नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन रखो दिमाग में and just yes answer this question. Yes anterior बेटा आगे की तरफ प्रेजेंट है ना, मीडियल साइड पे थोड़ी है। हाँ वेरी गुड कृति, वेरी गुड, ज्यादा नहीं सोचना है। जीनल वेरी गुड, चिराग वेरी गुड, रिया वेरी गुड, यस सुशांत वेरी गुड बेटा। सो रिमेंबर बेटा, या रिमेंबर ओवर हियर दैट द टिबियल ट्यूबरोसिटी इट इज प्रेजेंट फॉरवर्ड्स, द टिबियल ट्यूबरोसिटी it is anteriorly present, it is anteriorly present. So beta what you have to do, you have to hold the tibia in the right in the normal anatomical position. कहने का मतलब है अगर वो राइट लेग की टिबिया है, if it is out of right leg you have to hold the right tibia in the right hand. If it is of the left leg, okay, so you have to hold the tibia, okay, in the left hand, right. दिस इज द बेसिक रूल ऑफ एनाटॉमी। पता है क्या होता है, अगर वाइवा में आपने पूरा टिबिया एक्सप्लेन कर दिया, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट इफ यू होल्ड द लेफ्ट टिबिया इन द राइट हैंड, examiner will straight away give you 0 because this is not the actual way of presenting it. So you have to be very clear about the normal anatomical position. The right should be holded in the right hand, okay, and the left in the left hand, right. So yes, that is something that you have to keep in mind. So right को जब right में hold करोगे तो obvious सी बात है जो condyles वाला part है वो ऊपर की तरफ आएगा, जो medial malleolus है वो body के midline के पास आना चाहिए lower end पे, ठीक है। lower end is short, upper end थोड़ा सा broad है, तो ये सब चीजें mind में रख के you will be able to get whether it is right or left. I hope it is clear to everyone beta side determination. I hope it is clear to everyone beta side determination. Yeah, just give me a thumbs up in the chat box. Just give me a thumbs up in the chat box beta if it's clear to everyone. Yes, Harsh, very good, very good. Reply करते रहा करो। Riya, Amira, very good, very good. Kriti, Chirag, Ash, very good. चलो, perfect, perfect beta. Now remember beta the structure. Okay, if we talk about the structure, you already know it is composed of like it is having 3 parts. Yes, it is having 3 parts beta. We have the upper end, shaft and lower end. We have the upper end, shaft and the lower end. Upper end, shaft and the lower end. So let us now discuss the upper end. Okay, the upper end, yeah, the upper end, shaft and the lower end one by one. Now beta, now the upper end basically consists of 3 parts. Okay, the upper end consists of 3 parts. We have the medial condyle. Okay, we have the lateral condyle. Yes, and we have the tibial tuberosity. We have the medial condyle, we have the lateral condyle, and we have the tibial tuberosity. Now, beta, remember, this is the anterior view. This is the anterior view, okay, of the upper end. Okay, this is the upper end. And this is the posterior view. Okay, this is the posterior view of the upper end.
Now beta, you already know this side will be the medial side. Okay, this side will be the medial side. So you again have to be very much particular about all the locations. This will be the lateral, and this will be again be the lateral part, right? Again be the lateral part. So yes, starting with the medial condyle beta. Starting with the medial condyle, you can see this is the medial condyle. Okay, this is the medial condyle. Now medial condyle, it is basically beta large. Okay, large, and it is like facing more posteriorly. Okay, it is facing more posteriorly, पीछे की तरफ थोड़ा सा ज्यादा prominent आपको दिखाई देता है. Okay, so yes, medial condyle ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, lateral condyle. ये क्या हो जाएगा, lateral condyle. Okay, we have the medial condyle and we have the lateral condyle. So remember the medial condyle. Yes, let me use another pen. Yes, it is large. Okay, it is large, and yes, it is more prominent posteriorly. It is more prominent posteriorly. Yes. Now this medial condyle has 4 surface beta. This medial condyle has 4 surfaces, and even I don't need to tell you the name of these 4 surfaces. बेटा एक आगे की तरफ होगा, उसको बोलते हैं एंटीरियर सरफेस. एक ऊपर की तरफ होगा बेटा, तो उसको बोलेंगे सुपीरियर सरफेस. एक मीडियल साइड पे होगा तो उसको बोलेंगे मीडियल सरफेस. और एक पीछे की तरफ होगा बेटा, दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस. तो मीडियल सरफेस हो गया, सुपीरियर हो गया, or anterior or posterior. So we have 4 surfaces of the medial condyle, and that is very much clear in the picture that it is anterior surface, right? It is anterior surface. We have, yes, medial surface, medial surface. We have superior surface जो ऊपर की तरफ है, superior surface, and yes, we have the posterior surface. Posterior surface. So yes, we have 4 surfaces of the medial condyle. आगे की तरफ anterior, ऊपर की तरफ superior, पीछे की तरफ posterior हो गया, और medial side पे क्या हो जाएगा, medial surface, right? चलो इतना क्लियर है सब लोगों को. फटाफट से एक थम्स अप दे दो कि ये तो चलो 4 सरफेस तो पता चल गए. मीडियल कॉन्डाइल के 3 पार्ट्स होते हैं, और तीनों पार्ट्स मैंने आप लोग को पहले भी बता दिए. मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, और ये क्या हो जाएगी, टिबियल ट्यूबरोसिटी. यस, दिस विल बी टिबियल ट्यूबरोसिटी. यस, और टिबियल ट्यूबरोसिटी को वी कैन नॉट सी बैक. यस, हर्ष, रिया, मेरा, कृति, चिराग. यस, एश, सुशांत, जीनल, रिया, चिराग. ओके, हासिरा, वेरी गुड, वेरी गुड. जर्डी ट्यूबरकल क्या लिखा है बेटा, सही से तो लिखो पहले. टिबियल ट्यूबरोसिटी. अभी आ रहा हूं बेटा, सारे पार्ट्स पे आऊंगा, एक एक करके ही समझा सकता हूं ना. यस वरुण, एक एक करके ही समझाया जा सकता है बेटा. नाउ व्हेन आई से सुपीरियर सरफेस बेटा, मीडियल कॉन्डाइल का, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहले सुपीरियर सरफेस ले लेते हैं. सुपीरियर सरफेस. ओके, नाउ yes, yes. Now let us now we are going to discuss the superior surface, and yes, let me have this view with me. Okay, now beta, this is the superior view. Now this is the superior view beta, this is the superior view. हम ऊपर से देख रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये मीडियल कॉन्डाइल हो गया, आगे की तरफ है. ये लेटरल कॉन्डाइल हो गया, जो आगे की तरफ है, ठीक है. और ये अब हम ऊपर से देख रहे हैं, तो अब हमें ये 2 सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं. मीडियल साइड पे जो ये ऊपर की तरफ है, तो ये मीडियल का कौन सा सरफेस हो जाएगा, सुपीरियर सरफेस. मीडियल का कौन सा, मीडियल कॉन्डाइल का कौन सा सरफेस हो जाएगा, सुपीरियर सरफेस. हम लोग ऊपर से देख रहे हैं बेटा, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं. सो बेटा, यू ऑलरेडी नो सुपीरियर सरफेस जो है मीडियल कॉन्डाइल का,
वो किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा? टेल मी इन द चैट बॉक्स, इट विल आर्टिकुलेट विद विच बोन? ओके, इट विल आर्टिकुलेट विद विच बोन? चलो फटाफट से बताओ, इसका आंसर बताओ, इट विल आर्टिकुलेट विद विच बोन? यस, femur. Yes, Kriti, very good. Genial, very good, very good, very good, beta. Everyone is right, everyone is right. Yes, yes. So you already know ki if suppose, let me just draw it for you people. Huh. So it is somewhat like this. So this is the medial condyle and this is the lateral condyle. So medial condyle का ऊपर वाला surface है, ठीक है, superior surface, and this surface will be articulating with a, yes, this surface will be articulating with a, yeah, femur bone. So remember beta, just write it over here, the superior surface, okay, the superior surface, it is articular surface. ऊपर वाला जो surface है, it is articular surface. It is articular surface and it articulates with medial condyle of femur. Medial condyle of femur. Okay, now this articular surface, okay, it is like oval. Okay, it is concave, smooth, or I can simply say oval surface. It is there, oval surface present hota hai beta. It is, yes, articulating with the medial condyle of the femur. Okay, now beta, this superior surface has, yes, now beta, let me draw one diagram for you people so that it's way clear to you people that, yeah, what I'm just trying to explain you. Okay, now let us now draw this beta. You already know, I'm just trying to draw the, yeah, superior view of the tibia. Okay, superior view of the tibia bone, and the diagram which is given in the book, I'll just try to replicate it so that it becomes more easier to you. Yes, now, yes, please draw along with me beta, please try to draw along with me. So yes beta, this is yeah, तो पहले directions mark कर ले. This is the medial side which I have just tried to draw. Yeah, this is the lateral side which I have just tried to draw. Okay, now ये आगे की तरफ है एंटीरियर एंड दिस इज लाइक पोस्टीरियर. एंटीरियर पोस्टीरियर है, आगे की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर, और ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है. आई होप द डायरेक्शंस आर क्लियर, आई होप द डायरेक्शंस आर क्लियर, आई होप द डायरेक्शंस आर क्लियर बेटा. ठीक है, सो यस, यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव yes, we have an impression over here, right? We have an impression, oval impression over here, and this oval impression beta, okay, this oval impression, it is for, yeah, this is the oval impression. Okay, it is an oval impression, it is concave impression, it is concave and smooth, and this is the impression on the superior surface. This is the superior view, so it is on the superior surface where it will articulate with the, yeah, femur bone, right? It will articulate with the medial condyle of the femur. Yes, now now beta, this medial condyle has, yes, this medial condyle has, yes, yeah, there is something which is called as the anterior margin, posterior margin, okay, and the medial margin. Okay, anterior, posterior, and the medial margin, basically, yeah, they will meet up at a fibrocartilaginous plate, and this is something which is called as the medial meniscus. Okay, this is called as the medial meniscus. This is called as the medial meniscus. Okay, so yes,
मेनिस्कस का मतलब बेटा क्या होता है? मेनिस्कस का मतलब होता है फाइब्रो कार्टिलेजिनस प्लेट। फाइब्रो कार्टिलेजिनस प्लेट, जो फाइब्रस मेम्ब्रेन का है, फाइब्रो कार्टिलेज, इट विल बी वेरी हार्ड, राइट? फाइब्रो, फाइब्रस वर्ड किस लिए आता है? हार्डनेस के लिए। Okay, so it is made up of fibrous tissue and cartilage, so it is also called as the fibrocartilaginous plate. Okay, so it is also known as the fibrocartilaginous plate. So remember beta, yeah, so kindly write it down that, yeah, in the superior surface what else you will get? Yes, the anterior, medial and the posterior margin. The anterior, medial and the posterior margin, basically they will meet at, or they'll create a plate that is, or they'll meet at the medial meniscus. Medial meniscus, and that is nothing but the cartilaginous plate. Fibrocartilaginous plate, right? Yes. So yes, beta, just remember beta, over here we have this, yeah. If you just want me to bifurcate also, yes beta, this is the medial margin. This is the anterior margin, okay, the anterior margin. This is the posterior margin behind, medial, anterior and posterior. And we have this lateral margin also beta. We have this lateral margin. देखो, टिबिया के हिसाब से तो ये लेटरल मार्जिन हो गया ना, टिबिया के हिसाब से तो दिस विल बी द लेटरल मार्जिन, क्योंकि ये लेटरल साइड पर है, ये लेटरल साइड पर है, ये लेटरल साइड पर है. सो रिमेंबर बेटा, द लेटरल मार्जिन, ओके, it projects up to form the medial intercondylar tubercle. ओके, यहाँ पर एक ट्यूबरकल देखने को मिलता है. बेसिकली ये जो मार्जिन होती है ना, ये थोड़ा सा और ऊपर उठ जाती है. ऊपर उठने को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन बोलते हैं बेटा. इट इज कॉल्ड एज एलिवेशन, ठीक है. और इसी से एक ट्यूबरकल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल. ओके, so yes, if you can just see over here beta, yes, देख रहे हो, ये लेटरल साइड हो गई बेटा, ये लेटरल मार्जिन हो गई. और यही लेटरल मार्जिन थोड़ा सा अगर ऊपर उठ जाए तो ये एक ट्यूबरकल, एक राउंडेड प्रोजेक्शन बना रही है बेटा, ठीक है. सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल. ओके, मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल, राइट? मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल. ओके, दैट इज अ स्मॉल क्या कह सकते हैं? इट इज ट्यूबरकल, इट इज राउंडेड प्रोजेक्शन ऑफ द बोन, राउंडेड प्रोजेक्शन ऑफ द बोन. और आप देख भी सकते हो ये राउंड प्रोजेक्शन बना रहा है, एंड दैट इज फॉर्म बाय द मीडियल कॉन्डाइल का ही जो लेटरल मार्जिन है उसी का, ठीक है. medial condyle superior surface lateral margin. So you just have to mention this in your notes as well. Ki the lateral margin, okay, the lateral margin, basically it will project up to form the medial intercondylar tubercle. Medial intercondylar tubercle. ट्यूबरकल का मतलब आपको मैंने कल भी बताया था बेटा. इफ सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द बोन, इट इज like coming out, which is rounded in shape, and that is called as the tubercle. That is called as tubercle. So that is about this. So I hope the superior surface is clear to everyone. I hope the superior surface is clear to everyone. I hope the superior surface is clear to everyone. So yes, the lateral margin, it is forming a tubercle. You can show this tubercle also. Yes, this is called as the medial intercondylar tubercle. Yes, Harsh, Ash, Riya, Jinal, very good. Medial intercondylar tubercle. Medial intercondylar tubercle, right? Medial intercondylar tubercle. So that is about the superior view. That is about the superior view. Now, yeah, the superior surface is done. Coming on to the posterior surface, beta. Posterior surface of the medial condyle. Now you can very well see the posterior surface over here. Yes.
Now let us just write it over here. So yes, the posterior surface. So yes, this is the medial side, beta. This is the lateral side, right? And yes, this is the posterior view. This is the posterior view. So remember, beta, the posterior surface, basically it will present with a groove. Okay, the posterior surface of the medial condyle. This is the posterior surface. Okay, this is the medial condyle and this is the posterior surface. It will present with a groove. Okay, for attachment of capsule of knee joint. It will be consisting of a groove for attachment of, yes, for groove present. It is for attachment of capsule of knee joint. And remember, beta, this groove also will receive insertion, okay, from a muscle that is called as, yeah, I'll write it this with red because it is very, very important. It is semi-membranous, okay, semi-membranous tendon insertion will be there. देखो सेमी मेम्ब्रेनस क्या होती है, मसल होती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये बोन है, ठीक है, ये बोन है और इसी बोन से ये मसल है, सेमी मेम्ब्रेनस मसल. अब मसल जो है इस बोन से अटैच होगी विद द हेल्प ऑफ टेंडन, तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन. इसको क्या बोलेंगे, सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन. तो इसी पोस्टीरियर सरफेस पर ये जो आपको ग्रूव देखने को मिल रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पर जो आपको ये ग्रूव देखने को मिल रहा है, जस्ट लेट मी हाईलाइट दैट फॉर यू पीपल. Yes, this is the groove which you will see. Groove का मतलब होता है गड्ढा बेटा. Groove का मतलब होता है गड्ढा. So which you will see over here, and that is, yeah, attachment of capsule of the knee joint or the semi-membranous tendon. Is it clear to everyone? Is it clear? Posterior surface. Now remember, beta, the, yes, very good, Riya, Ash, Rama, very good, very good. The third one, beta, if you can just see in the picture as well, I have the picture also. Yes. So you can see the posterior side also, right? The posterior, yes, this is a groove which is present. Yeah. The third point, beta, that you have to remember about the, yeah, medial and anterior surface. And just remember, beta, medial and anterior surface. Okay, medial and anterior surface. Okay, so the medial and the anterior surface is basically beta very rough. Okay, very rough, and they have various holes in them. Various holes in them. Okay, they have various holes in them, and that is something that you have to remember. Yeah, they are pierced by vascular foramina. Vascular foramina. Vascular foramina. You guys will be able to see over here in this particular picture, beta. You can see the anterior surface. You can see these small holes are there. Okay, the anterior surface, and yeah, towards the medial surface also. Anterior and medial both surfaces are basically pierced by vascular foramina. That is something that you have to remember in the, yes, medial condyle. That is something that you have to remember in the medial condyle. I hope it's clear to everyone. Yeah. Now coming on to the lateral condyle. Coming on to the lateral condyle. Now use your brains, guys, and tell me lateral condyle will have how many surfaces, and name the surface. Just compare it with the medial surface, the medial condyle, and let me know the surfaces of the lateral condyle. The lateral condyle of tibia. चलो फटाफट से बता दो कौन कौन से सर्फेसेस होंगे. यस रिया सिंह, वेरी गुड बेटा. इट विल अगेन हैव द फोर्थ सरफेस. चलो मेरे बच्चे तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं और फटाफट से नाम बता दो उनके. चलो पार्ट्स की लेबलिंग तो तुम खुद ही बताने लग गए हो अब. देखो हाउ स्मार्ट यू गाइस आर. चलो
वेरी गुड हर्ष, जीनल, ऐश, वेरी गुड। अब फटाफट से नेम्स बता दो। सो लेटरल कंडाइल ऑफ द टिबिया विल हैव 4 surfaces. We have the superior surface. Superior surface, yes. We have, हाँ ठीक है, जीनल ने आंसर किया एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और सुपीरियर। वेरी गुड जीनल पटेल, वेरी गुड बेटा। वी हैव द सुपीरियर सरफेस, yes. We have anterior surface, we have the posterior surface, and we have the lateral surface. अब यहाँ पे मीडियल सरफेस नहीं होगा ना बेटा, लेटरल कॉन्डाइल तो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, सो ऑब्वियसली यस हर्ष इट इज राइट। अब ऑब्वियसली तो फिर लेटरल वो होगा ना, लेटरल सरफेस होगा। सो एंटीरियर सुपीरियर सरफेस बेटा, रिमेंबर इट इज कंटेनिंग अ सर्कुलर फोसा, it is containing a circular facet, okay, for articulation with, for articulation, remember articulation with lateral condyle of femur, lateral condyle of femur, lateral condyle of femur। तो उसी डायग्राम को अगर कंप्लीट करूं बेटा मैं, तो ये lateral condyle है, so you already know this will be the, yes, a circular part that will be, yes, this is the superior surface beta, and it is a circular facet, okay, it is a circular facet, so you already know we have this circular facet over here, circular facet, and remember that beta this facet is for articulation with the lateral condyle of femur, the lateral condyle of the femur, the lateral condyle of the femur, okay। सेंटर बेटा देखो इसका कनकेव होता है, सेंटर जो होता है ना कनकेव होता है, और पेरिफेरी फ्लैट होती है। इफ यू वांट अ क्लियर इमेज आई विल जस्ट शो यू राइट नाउ ओवर हियर। देखो सेंटर में क्या देखने को मिलेगा, गड्ढा देखने को मिलेगा। पेरिफेरी जो देखोगे ना इसकी वो फ्लैट होती है बेटा, periphery will be almost flat, okay, so periphery is more flat, okay, and center is concave, बीच में ऐसे गड्ढा देखने को मिलेगा, yes, और बाकी फ्लैट होगी पेरिफेरी। इट इज जस्ट लाइक या बाउल टाइप स्ट्रक्चर हो जाता है ये तो एक, ठीक है। सो रिमेंबर बेटा सुपीरियर सरफेस में या इसमें जो सेंटर होता है दैट इज फ्लैट, and remember, sorry, the center is concave, c से c याद रखो, it is center is concave, yes, and remember the periphery is flat, periphery is flat, right, yes। अब यहाँ पे कौन सा मेनिस्कस प्रेजेंट होगा बेटा, which meniscus will be present, फटाफट से आंसर दो, यहाँ पे कौन सा मेनिस्कस प्रेजेंट होगा थ्रू आउट, which meniscus will be present, फटाफट से आंसर दो। चलो आंसर दो जल्दी से, which meniscus will be present बेटा, yes it will be the lateral meniscus, very good Riya Singh, very good, lateral meniscus। So yes you should be aware that the lateral meniscus, it is attached to periphery, lateral meniscus, it is attached to periphery, very good Riya, very good Chirag, lateral meniscus it is attached to पेरिफेरी, और मेनिस्कस का मतलब मैंने पहले भी बताया था, इट इज अ फाइब्रो कार्टिलेजिनस प्लेट, okay, it is a fibro cartilaginous plate, so yes everyone is right, Varun very good, it is a fibro cartilaginous plate बेटा, okay, और facet present होता है to, yeah। Now coming on to the posterior surface बेटा, posterior surface, and you guys are already very well aware that, yeah, the posterior surface, चलो ये देखो बेटा, ध्यान से अगर देखो तो ये मीडियल कॉन्डाइल है, और ये लेटरल कॉन्डाइल का पोस्टीरियर व्यू है, पोस्टीरियर व्यू है। तो अगर ध्यान से देखोगे कि पोस्टीरियर सरफेस पर एक फैसेट नजर आ रहा है, पोस्टीरियर सरफेस पर एक फैसेट नजर आ रहा है, और इट इज फॉर आर्टिकुलेशन विद द फिबुला। आपको पता है ये फिबुला के साथ आर्टिकुलेट करता है,
So it is the lateral condyle posterior surface beta. It is the lateral condyle posterior surface. पीछे की तरफ present है, side में भी actually present नहीं है पूरा. Okay. So you guys have to remember, yes, you can see this facet beta over here. ये lateral condyle है और posterior view है. तो ये पीछे की तरफ ये facet नजर आ रहा है. So yes, this is for the attachment with the fibula, and again we have to mention in our flow chart that this posterior surface basically it consists of the smooth facet, okay, smooth facet. So for articulation with fibula, right? Fibula, anterior surface and lateral surface, okay. Yes, anterior surface and lateral surface. Yes. Now, beta, you already know the anterior surface will consist of, yeah, muscle. Yes, that is called as the iliotibial tract. Yes. Yes, it will give attachment to the iliotibial tract. Yes, and the lateral surface beta, it will give attachment to, yeah, or I would say combinedly anterior lateral surface plus anterior surface will give attachment to the, yes, lateral surface plus anterior surface will give attachment to the lateral patellar retinaculum. Lateral patellar retinaculum. So it will give attachment to the lateral patellar retinaculum. Okay, it is a membrane-like structure that we will be discussing later on in our lecture. So no need to worry if something new comes, beta. Again, I've just started. Some things you will learn with the course or with the flow of the course. Exactly सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा एक बार में. तो धीरे-धीरे करके सब कुछ आएगा, ठीक है? Yes. Apart from that, बेटा posterior surface पर एक tendon और attach होता है. That is, you have to remember it is tendon for popliteus muscle. Tendon for popliteus muscle. You already know this is the bone. Bone पे अगर ये muscle है popliteus, तो इसी muscle की attachment के लिए क्या use करेंगे? Tendon. So we have the tendon for popliteus muscle over here. Right? I hope this is clear to everyone over here. Yeah, all the surfaces are clear. Lateral condyle. फटाफट से thumbs up दे दो if it is clear to each one of you, beta. I have already discussed, yeah, I have already discussed about this and it is very much clear over here. You can see the articular facet for fibula, right? Lateral condyle, yes, yes, yes. Riya Singh, Ash, Chirag, very good, beta, very good. तो फटाफट से चलो ठीक है, अभी तो मैंने इतना कुछ पढ़ाया नहीं है, तो yes, you can easily answer this everything, right? So चलो. लेटरल हमने दो पार्ट्स डिस्कस कर लिए. मीडियल कॉन्डाइल डन, lateral condyle done. Yes, medial condyle done and the lateral condyle done. Now beta, there is an yeah. Before coming to the tibial tuberosity, I want to discuss the area between the superior surface. If you can see beta over here that, yes, if you can see over here beta, there is an area between the two condyles, okay, in the superior surface, and this area beta, and this area, it is called as the inter का मतलब होता है दो के बीच में. It is called as the intercondylar area. It is called as the intercondylar area. It is present between the two condyles, medial condyle and the lateral condyle, and it is in the superior view you will get an intercondylar area. So yes, our next point of discussion over here will be the intercondylar area. And yes, intercondylar, inter means between two condyles, okay, between two condyles, okay, this area is present. And remember, it is a rough area, it is a rough area, okay, which is present on superior surface. Okay, it is a rough area which is present on superior surface. It is a rough area which is present on superior
surface. Yes, yes. चलो इतना क्लियर है सब लोगों को? चलो इतना क्लियर है सब लोगों को? यस, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर. हम्म. हर्ष, वेरी गुड. वेरी गुड रिया, वेरी गुड. वेरी गुड. हाँ, चलो वेरी गुड ऐश, वेरी गुड बेटा. नाउ दिस intercondylar area, okay, this intercondylar area, it is, yes, it has, it is divided into three structures बेटा. एक तो हमारे पास है, यस, intercondylar eminence. Okay, we have an anterior area and we have posterior area. Okay, we have intercondylar eminence. Now बेटा eminence का मतलब क्या होता है? Elevation. Okay, बीच में ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे बेटा, बीच में if you can just see, yes, यस, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये उठा हुआ पार्ट है बोन का. एमिनेंस का मतलब होता है एलिवेशन, वो पार्ट बिल्कुल जो थोड़ा सा इट इज लाइक राइजिंग अबव. तो एलिवेशन पार्ट को हम लोग एमिनेंस बोल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, यू कैन सी दिस पार्ट बेटा इफ यू जस्ट वांट टू सी कि ये मीडियल कॉन्डाइल है और ये लेटरल कॉन्डाइल है, और इन दोनों के बीच में दिस पार्ट इज सर्टेनली एलिवेटेड. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस. इसको क्या बोलेंगे? इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस. राइट, इट इज कॉल्ड एज द इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस. बोन का वो हिस्सा विच इज सर्टेनली एलिवेटेड, विच इज सर्टेनली एलिवेटेड. और ध्यान से देखो तो बेटा ये दो तरह की ट्यूबरकल प्रेजेंट कर रहा है. दो तरह की ट्यूबरकल प्रेजेंट कर रहा है. तो एक का नाम क्या हो जाएगा? लेटरल, सॉरी, एक का नाम हो जाएगा मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल और एक का नाम हो जाएगा लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल. राइट, ध्यान से देखो, ये मीडियल कॉन्डाइल है, ये लेटरल कॉन्डाइल है. तो ये दो पहाड़ जैसे दिख रहे हैं तुमको. ठीक है, यही इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस है और इसी एमिनेंस पर ये जो पहाड़ जैसे तुम्हें दो दिख रहे हैं. ठीक है, अब बोन की स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है, अगर इसमें से थोड़ा सा पार्ट ऊपर की तरफ आ जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? राउंडेड प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूबरकल. That is called as tubercle. And this tubercle beta, it is between medial, देखो ये दोनों कंडाइल्स के बीच में है. तो एक मीडियल साइड पे तो नाम क्या हो जाएगा? मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल. और इस पे क्या हो जाएगा? लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल. लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल. ओके, लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल. सो रिमेंबर बेटा, यस, intercondylar eminence will consist of two tubercles, and remember we have, yeah, medial intercondylar tubercle and we have the lateral intercondylar tubercle. इंटर मतलब दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में ट्यूबरकल प्रेजेंट है. इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल एक मीडियल साइड पे तो मीडियल और एक लेटरल साइड पे, सो इट इज द लेटरल इंटरकॉन्डाइलर tubercle. Now again, 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 now, yes, if I want to draw, okay, let us just draw all the attachments over here. So this is the intercondylar eminence. Okay, so this is what I am highlighting right now. Yes, it is the intercondylar eminence. Intercondylar eminence. एंटीरियर से वी आर गोइंग टू पोस्टीरियर साइड, आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं. सो वी हैव फॉलोइंग अटैचमेंट्स इन द इंटर दिस कंडाइलर एरिया बेटा. इंटरकॉन्डाइलर एरिया वी हैव फॉलोइंग अटैचमेंट. ओके, सो रिमेंबर बेटा, वन अटैचमेंट. ओके, आई शुड ड्रॉ इट विद रेड कलर. आई, हाँ, ठीक है. सो यस, now we have over here that is the anterior horn of the medial meniscus.
एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्कस फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं सुपीरियर व्यू में, आगे से पीछे की तरफ जा रहे हैं और ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं तो एंटीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस देखने को मिलेगा। फिर हमें मिलेगा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, सो दिस इज एंटीरियर हॉर्न ऑफ, yes, anterior horn of medial meniscus. We have anterior cruciate ligament, anterior cruciate ligament, okay, and we have one more meniscus, okay, then it is towards the lateral side, so इसका नाम आगे की तरफ ही है but lateral side पे है, so it is anterior horn of lateral meniscus, anterior horn of the lateral meniscus, anterior horn of the lateral meniscus. सेम बेटा पीछे की तरफ होगा, सेम बेटा पीछे की तरफ होगा, वी हैव, यस, इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस से पीछे हो जाएगा, सो दिस विल बी पोस्टीरियर horn of lateral meniscus, yes, it is posterior horn of the lateral meniscus. We have, yeah, posterior horn of the medial meniscus, posterior horn of medial meniscus, and we have at the back, that is the posterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament, posterior cruciate ligament. So remember beta, whenever we are talking about the intercondylar area, okay, so yes, this intercondylar area, it is divided into yeah, by the help of intercondylar eminence, that is the elevation, okay, just in the middle, it is divided into anterior intercondylar area, anterior intercondylar area, and we have the posterior intercondylar area. Now remember beta, anterior intercondylar area will contain anterior horn of medial meniscus, anterior horn of the medial meniscus, we have anterior cruciate ligament, anterior cruciate ligament, yes, we have anterior horn of lateral meniscus, yes, anterior horn of the lateral meniscus. Now in the posterior area, basically you already know we have again three, yeah, attachments here. Yeah, we have the posterior horn of lateral meniscus, then we have posterior cruciate ligament, and the third one beta, it is the posterior horn of medial meniscus, right? Posterior horn of the medial meniscus. So that was about the intercondylar area. That was about the intercondylar area. So in the upper end beta, we have discussed the medial condyle, lateral condyle, और इन्हीं के बीच में सुपीरियर सरफेस पर
सुपीरियर सरफेस पर एक एरिया प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरकॉन्डाइलर एरिया, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरकॉन्डाइलर एरिया। ठीक है, दो कंडाइल्स के बीच में जो एरिया होता है उसी में एमिनेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस। और उसी एमिनेंस पे वी हैव एंटीरियर एरिया एंड पोस्टीरियर एरिया, और उस पे तीन तीन अटैचमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, तीन अटैचमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। नाउ कमिंग ऑन टू द टिबियल ट्यूबरोसिटी बेटा, नाउ कमिंग ऑन टू द टिबियल ट्यूबरोसिटी। यस, अगेन अपर एंड ही है जो थोड़ा सा टाइम लेता है, अदरवाइज तो एवरीथिंग इज लाइक वे इजी। तो टिबियल ट्यूबरोसिटी बेटा, जस्ट आई विल राइट 2 points to make it short. Yes, we have the third part that we have to discuss in upper end, that is the tibial tuberosity. Tibial tuberosity, and this tibial tuberosity, basically it is on the anterior part of the upper end. Okay, anterior part of the upper end. So it is divided into upper part. Okay, it is divided into upper part and it is divided into lower part. Okay, it is divided into upper part and it is divided into lower part. Upper part, it is smooth and it gives attachment to beta. It gives attachment to ligament. It gives attachment to ligament, and in Latin it is called as the ligamentum patellae. Okay, patellar ligament hota hai, ligamentum patellae. So yes, I'm writing it in Latin, ligamentum patellae. And the lower part beta, it is giving rise to a bursa. Okay, a fluid-like structure that you have to remember. Yes, it is the lower part, it is beta subcutaneous. Subcutaneous कहने का मतलब है you can feel it under the skin. You can feel it under the skin. So it is subcutaneous beta. Okay, and yes, a bursa is present that is called as infrapatellar bursa. Okay, infrapatellar bursa. Bursa is just like a fluid which separates it from the skin. Okay, which separates it from the skin. जैसे साइनोवियल फ्लूइड सुना हुआ है उसी तरीके से ये बरसा होता है, ठीक है, which separates it from the skin. So if you want, I can just show you in the picture as well, beta. So this is the, yes, tibial tuberosity. So this is the upper part. Okay, this is the upper part of the tibial tuberosity. Tuberosity में बेटा एरिया ज्यादा हो जाता है, and this is the lower part of the tibial tuberosity. तो अपर पार्ट से बेटा एक लिगामेंट अटैच होता है, दैट इज लिगामेंटम पटेले, एंड ओवर हियर द लोअर पार्ट कंटेन्स अ बर्सा दैट इज कॉल्ड एज द इंफ्रापटेलर बर्सा, दैट इज कॉल्ड एज द इंफ्रापटेलर बर्सा. I hope the upper end is clear to each one of you beta. Just give me a thumbs up if it is clear to each one of you. तो अपर एंड को हम लोग एक्सप्लेन कैसे करते हैं, अपर एंड को एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि यू हैव टू जस्ट टेल द पार्ट्स फर्स्ट टू द एग्जामिनर, द मीडियल कंडाइल, द लेटरल कंडाइल एंड द टिबियल ट्यूबरोसिटी. नाउ मीडियल कंडाइल, हर्ष वेरी गुड बेटा, आई एम जस्ट रिवाइजिंग विद यू गाइस. मीडियल कंडाइल के चार सरफेस, आगे की तरफ एंटीरियर, मीडियल साइड पे मीडियल, पीछे की तरफ पोस्टीरियर और साइड में लेटरल. तो सुपीरियर सरफेस, हाँ सॉरी लेटरल नहीं होगा, सुपीरियर सरफेस होगा. Yeah, we have the medial surface, right? We have the medial surface. Yes. ठीक है. अब सुपीरियर सरफेस पर एक ओवल फैसेट होता है फॉर आर्टिकुलेशन विद द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, और उसके बाद उसको बाउंड करता है एंटीरियर, पोस्टीरियर और जो उसकी जो मार्जिन होती है दैट इज द मीडियल मार्जिन. तो दैट इज लाइक बाउंडेड बाय अ मेनिस्कस, दैट इज द क्या बोलते हैं उसको, मीडियल मेनिस्कस. ओके, या तो ऑब्वियसली बात है कि आफ्टर दैट यू गाइस विल टॉक अबाउट द लेटरल कंडाइल. लेटरल कंडाइल अगेन हैज ऑल फोर सरफेसेस, ठीक है. और लेटरल कंडाइल के पोस्टीरियर सरफेस पर आपको क्या देखने को मिलता है, यू आर वेरी वेल अवेयर, वी आर सीइंग एन फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद द फिबुला, आर्टिकुलेशन विद द फिबुला, राइट. अब इन्हीं दोनों लेटरल कंडाइल और मीडियल कंडाइल के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर एरिया. इंटरकॉन्डाइलर एरिया इट इज ऑलवेज सीन ऑन द सुपीरियर सरफेस. इंटरकॉन्डाइलर एरिया कहां देखने को मिलता है, सुपीरियर सरफेस में. इसी इंटरकॉन्डाइलर एरिया में एमिनेंस देखने को मिलती है, एलिवेशन देखने को मिलती है, और ये एलिवेशन का नाम क्या हो जाता है, यस यस वी हैव मीडियल इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस और लेटरल इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस. मतलब इसी पे एक ट्यूबरकल देखने को मिलेगी, दिस ट्यूबरकल इज यस मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल और लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल. ओके,
After that, you have already studied about the tibial tuberosity. That is like just upper and lower part. Upper part is smooth. It gives attachment to one of the ligament of the patella. That is ligamentum patellae. And lower part, it is present just under the skin. There is a fluid-like structure called as bursa. चलो इतना क्लियर हो गया सब लोगों को. नाउ कमिंग ऑन टू द शाफ्ट. नाउ कमिंग ऑन टू द शाफ्ट. अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे. चलो. I hope this is clear everyone. हाजिरा चलो very good. I hope this is clear everyone. I hope it is clear everyone. चल फटाफट से स्टार्ट करते हैं. या फटाफट से स्टार्ट करते हैं. Let me just have water. या चलो हर्ष very good बेटा. Now we are going to start with the shaft. बहुत इजी है बेटा. बहुत इजी है. पहले मैं जनरल स्ट्रक्चर बता देता हूं आपको कि द शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ यस the shaft consists of 3 borders and 3 surfaces. Okay, it consists of 3 borders and we have 3 surfaces. 3 borders and 3 surfaces. Okay, now you already know this is the anterior view और ये वाला व्यू क्या है, पोस्टीरियर व्यू है. तो ये एंटीरियर व्यू है, ये तो सबको क्लियर है ही, तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है. देखो टिबियल ट्यूबरोसिटी से अ लाइन इज कमिंग. मैंने बताया था ना बॉर्डर और सरफेस में, बॉर्डर में एरिया कम होता है, बॉर्डर बिल्कुल एक लाइन की तरह होती है. तो यू कैन सी वन लाइन विच इज कमिंग इन फ्रंट एंड इट इज गोइंग डाउन टुवर्ड्स द मीडियल मेल्यूलस. मीडियल मेल्यूलस की तरफ जा रही है, मीडियल मेल्यूलस. तो ये जो बॉर्डर होगा बेटा, दिस बॉर्डर विल बी द एंटीरियर बॉर्डर. This border will be the anterior border. ये खुद ही दिख जाएगा. Anteriorly there is a line which is present that is called as the anterior border. Yes, very good. एक लाइन बेटा ये वाली लाइन हो गई. मीडियल साइड पे देखो ये मीडियल हो गया ना, और ये लेटरल हो गया. अच्छा, एक साइड ये वाली हो गई, that is called as the medial border, right? ठीक है. तो रिमेंबर बेटा वी हैव 3 borders. एक एक करके नाम लिख लेते हैं पहले. We have the anterior border, we have the medial border. Okay, so we have anterior border, we have the medial border, and let me take you to this picture. Okay, let me take you to this picture. Now you already know, suppose beta this is the midline of the body. Suppose this is the midline of the body. Body का midline है. So tibia it is close to the midline of the body. Tibia it is close to the midline of the body. तो ये वाला बॉर्डर जो मैंने अभी मार्क करके बताया था, ये वाला कौन सा बॉर्डर हो गया, मीडियल. ये वाला कौन सा बॉर्डर हो गया, मीडियल. ये आगे वाला बॉर्डर कौन सा हो जाएगा, एंटीरियर. एंटीरियर बॉर्डर. और ये वाला जो बॉर्डर बेटा जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है टिबिया की, इस लेटरल बॉर्डर को हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरऑशियस बॉर्डर. इसको क्या नाम देते हैं, इंटरऑशियस बॉर्डर. इसको लेटरल बॉर्डर भी बोल सकते हैं या इसको इंटरऑशियस बॉर्डर बोलेंगे. स्पेसिफिक नेम देंगे बेटा. इंटर का मतलब होता है दो बोन के बीच में, दो बोन के बीच में. इंटरऑशियस, ऑशियस मींस बोन. ओके, यहां से एक मेम्ब्रेन अटैच होती है, व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन दिखती है, इसको बोलते हैं इंटरऑशियस मेम्ब्रेन. इसको क्या बोलते हैं, इंटरऑशियस मेम्ब्रेन. So remember beta we have 3 borders. Okay, we have 3 borders, anterior, medial and interosseous border. Anterior, medial and interosseous border. तो ये वाला जो बॉर्डर हो जाएगा बेटा, दैट विल बी द इंटरऑशियस बॉर्डर, क्योंकि इसी बॉर्डर से बेटा क्या अटैच है, इंटरऑशियस मेम्ब्रेन. इंटरऑशियस बॉर्डर.
इंटरऑशियस बॉर्डर, इंटरऑशियस बॉर्डर। अब तीनों पॉइंट्स ले लो। एंटीरियर मैंने ले लिया, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। वी हैव, यस, मीडियल बॉर्डर, और वी हैव इंटरऑशियस बॉर्डर, interosseous border, or we can simply say it as the lateral border also. lateral side पे lateral border है, और पीछे की तरफ कोई बॉर्डर नहीं होता। पीछे there is no border, it is like very much concave, right? There is no border over there, right? convex है पीछे की तरफ। तो obviously बात है बेटा, obviously बात है कि the area between the anterior and the medial border, ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है बेटा, ये किस साइड है? ये मीडियल साइड है। तो ये कौन सा सरफेस हो जाएगा बेटा? ये कौन सा सरफेस हो जाएगा? दैट विल बी द मीडियल सरफेस, दैट विल बी द मीडियल सरफेस। तो एंटीरियर बॉर्डर से मीडियल बॉर्डर तक वी हैव द मीडियल सरफेस, वी हैव द मीडियल सरफेस। फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर टू द इंटरऑशियस बॉर्डर, ये लेटरल साइड पे है, तो ये क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। और लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के पीछे ये पूरा का पूरा बेटा, देखो लेटरल सरफेस ये हो गया लेटरल सरफेस, और ये पीछे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? दैट विल बी द पोस्टीरियर सरफेस, दैट विल बी द पोस्टीरियर सरफेस, दैट विल बी द पोस्टीरियर सरफेस। ये मैंने क्या किया, मैंने बोन को बीच में से काट दिया और मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये इस तरीके से है बॉर्डर्स। तो आई होप दिस इज क्लियर बेटा। थ्री सरफेसेस भी क्लियर हो गए। वी हैव द मीडियल सरफेस, we have the medial surface, lateral surface and posterior surface। ये क्लियर है सब लोगों को? जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी से बता दीजिए if it is clear to every one of you। रिया वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हर्ष वेरी गुड बेटा। ये समझ में आ गया तो अटैचमेंट्स क्लियर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है अटैचमेंट्स में। रिया, हर्ष वेरी गुड। बाकी सभी रिप्लाई कर दिया करो, जो भी वीडियो देख रहे हैं जस्ट ट्राई टू रिप्लाई बेटा, राइट? या ऐश, चिराग वेरी गुड। या चलो अब शाफ्ट में बेटा, शाफ्ट में यस, ठीक है। तो शाफ्ट में बेटा अगर मैं मीडियल सरफेस की बात करूं, ठीक है, तो मीडियल सरफेस पर तीन मसल्स और वो होती हैं। तो अटैचमेंट्स की अगर हम बात की जाए, ठीक है, तो सरफेस और बॉर्डर्स तो पता चल गए, सरफेस और बॉर्डर्स तो बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अटैचमेंट्स में सबसे पहले शाफ्ट की अगर अटैचमेंट्स देखी जाए, ओके, अटैचमेंट्स देखी जाए, तो रिमेंबर बेटा इफ यू टॉक अबाउट मीडियल बॉर्डर, ओके, तो मीडियल बॉर्डर पे कोई अटैचमेंट आज सच नहीं है, ठीक है। मीडियल बॉर्डर बेसिकली कहां से स्टार्ट होता है? मीडियल कॉन्डाइल से शुरू होता है, ठीक है, और ये एंड होता है पूरा का पूरा बॉर्डर कहां पे? दैट इज द मीडियल मेल्यूलस, ओके, दैट इज द मीडियल मेल्यूलस, मीडियल मेल्यूलस पर एंड होता है। सो अगर ये लिखना है तो ये लिख भी सकते हो बेटा। तो मीडियल बॉर्डर बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम, स्टार्ट्स, it starts at medial condyle, okay, it starts at medial condyle and it ends at medial malleolus, medial malleolus, okay, medial malleolus, okay। Now now you already know, yeah, the medial surface beta, medial border पे कुछ भी अटैच नहीं है सच। medial surface की अगर बात की जाए तो medial surface, okay, medial surface it is present between which borders beta? चलो I want everyone to answer this question। medial surface it is present between which borders? Okay, it is present between which borders beta? It is present between, yeah, yes, anyone who would like to answer? It is present between, yeah, medial and, yes, it is present between, very good Chirag, very good, anterior and
मीडियल बॉर्डर, ओके, ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया, और ये एंटीरियर बॉर्डर है, और ये मीडियल बॉर्डर है, और ये जो पूरा का पूरा एरिया है दैट इज द मीडियल surface, medial surface. Now this medial surface, okay, this medial surface is subcutaneous. It is subcutaneous except its upper part, beta, where it gives insertion to three muscles. Okay, it gives insertion to three muscles, and that you have to learn with the help of a mnemonic SGS. We have sartorius muscle, gracilis muscle, okay, and we have semitendinous muscle. So we have three muscles beta over here. Yes, Riya, you are right. Harsh, right. Beta. So yes, in the upper part only, we have three muscles. Yes, S, G, and S. S, G, and S. Sartorius, gracilis, and semitendinous muscle on the medial surface. On the medial surface. Okay. Now, yes, posterior surface beta. Posterior surface, that is something which you have to remember. Okay, posterior surface. Beta, you already know ये medial side है, ये lateral side है. So you are very well aware it is present between the medial and the lateral border. The medial border and the lateral border, right? The medial and the lateral border, or lateral or interosseous border. Interosseous border. Now this posterior surface, basically it is present between medial and interosseous border. So you already know this. I don't need to write every time. Okay. Yes. बेटा इसमें ना दो लाइंस देखने को मिल रही है. If you can see clearly बेटा, ये एक oblique line देखने को मिल रही है. If you can see this, we have oblique line बेटा over here. ये एक ऑब्लिक लाइन देखने को मिलती है, इसको सोलियल लाइन बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? सोलियल लाइन. दिस इज कॉल्ड एज द सोलियल लाइन ओवर हियर, राइट. और एक वर्टिकल लाइन देखने को मिलती है जस्ट लाइक फ्रॉम द बिटवीन, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज द वर्टिकल लाइन coming from the soleal line, midpoint of the soleal line, and this is the vertical line. Okay, so remember beta, it shows presence of two lines. We have the soleal line, okay, and we have this vertical line also. Vertical मतलब ऊपर से नीचे तक, soleal line and the vertical line. ओके, सोलियल लाइन बेटा देखो कहां से आ रही है, ये कौन सा फैसेट है? फिब्युलर फैसेट. इट इज कमिंग फ्रॉम द फिब्युलर फैसेट. ओके, ऑब्लिक लाइन है सोलियल लाइन. इट इज ऑब्लिक लाइन बेटा, इट इज ऑब्लिक लाइन and it is coming downwards. Okay, soleal line पर ही attach होती है एक muscle that is called as the soleus muscle. Very important. Over the soleal line a muscle is attached that is called as the soleus muscle. Okay, vertical line basically beta, it extends from the middle of the soleal line. Okay, downwards, dividing the posterior surface. Okay, dividing the posterior surface into lateral part and medial part. अब ये जो वर्टिकल लाइन है ये बिल्कुल बीच में से जा रही है एंड इट इज डिवाइडिंग द पोस्टीरियर सरफेस इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, lateral part and medial part. Sure. Up. Now there is a triangular area. If you just want, we can draw this also. Yeah, over here I will just try to explain you over here. Yes beta, this is the soleal line. Okay, this is the soleal line, and remember above the soleal line we have this triangular area. Okay, above the soleal line we have this triangular area, and this gives insertion to one of the muscle that is called as popliteus muscle.
It gives insertion to one of the muscle beta, and that is called as the popliteus muscle. So remember beta, we were discussing the posterior surface. We were discussing the posterior surface. It is like present between. It is present between the, yeah, medial and interosseous border. Interosseous border. So this surface basically consists of two lines. Okay, it consists of two lines, right? You already know the two lines beta, right? We have the soleal line, we have the soleal line, and we have the vertical line. Soleal line, basically this is the line which is coming from the fibular facet. Okay, this is coming from the fibular facet, and it is obliquely downwards, okay, towards the yes, towards the medial border, right? Towards the medial border from fibular facet, from fibular facet towards medial border, and vertical line, it is, yes, just from the midpoint. Yes, you can just see it is just in the middle only, right? So vertical, yes, vertical line, basically it is coming from midpoint of soleal line, dividing posterior surface into medial half and lateral half. Medial half and the lateral half, right? Medial half and the lateral half. So yes, medial side below the soleal line. Okay, medial side below the soleal line. Basically, yeah, yes, we have one muscle over here. Medial side below the soleal line. We have the muscle over here. Yes. So remember, beta. Okay, this muscle, it is named as flexor digitorum longus. Flexor digitorum longus. You will learn about these muscles in detail, beta. No need to worry. Just mention in your notes as of now. Flexor digitorum longus. Okay. And yes. So remember, beta, we have triangular area above soleal line. Okay. It gives insertion to popliteus muscle. It gives insertion to popliteus muscle. Yes. We have medial side below soleal line. It is flexor digitorum longus. Okay, it is originating from here, and yes, lateral area below the soleal line. Lateral area below the soleal line, we have one muscle, that is tibialis posterior. Tibialis posterior origin. Okay, lateral area मतलब ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, tibialis posterior. Okay, tibialis posterior. If you want, I can just show it in the picture as well. So you can see beta, on the soleal line, if you can just see over here beta, on the soleal line a muscle is attached, that is soleus. Okay, वर्टिकल लाइन के ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये मीडियल साइड हो गई और ये क्या हो गई, लेटरल साइड. तो वर्टिकल लाइन के इस साइड क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस. फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस. एंड वर्टिकल लाइन के लेटरल साइड क्या है, टिबियालिस पोस्टीरियर. और सोलियस के ऊपर कौन सी मसल है, दैट इज पोप्लीटियस. दैट इज पोप्लीटियस, राइट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये मीडियल कॉन्डाइल है, ठीक है, और ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, मीडियल सरफेस पे कोई मसल अटैच नहीं होती थ्रू आउट एक्सेप्ट द अपर पार्ट, जहां पर ग्रेसिलिस, सार्टोरियस और सेमी टेंडिनस अटैच्ड है, राइट. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन कि ये मसल्स वाला पार्ट समझ में आ गया. फटाफट से एक थम्स अप दे दो बेटा, जल्दी से, फटाफट से एक थम्स अप दे दो जल्दी से.
यस हर्ष, वेरी गुड, वेरी गुड रिया, वेरी गुड। चल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Ash, very good बेटा, very good. What about rest बेटा? Yes. Posterior surface पे भी हो गया? Yes. चलो, I have a question to everyone over here. Tibialis anterior. It is a muscle which is present over where? चलो फटाफट से देख के बताओ ये कहाँ प्रेजेंट है, किन दो बॉर्डर्स के बीच में प्रेजेंट है ये टिबियालिस एंटीरियर? It is present on lateral surface beta. Yes, it is present on यस, वेरी गुड बेटा। सो यू आर ऑलरेडी अवेयर बेटा। देखो मीडियल कॉन्डाइल है, ये मीडियल बॉर्डर हो गया, तो ये लेटरल बॉर्डर हो जाएगा, या इंटरऑस्टियस बॉर्डर बोलते हैं इसको हम लोग, और बीच में क्या है, एंटीरियर बॉर्डर। सो इट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल सरफेस बेटा। ओके, लेटरल सरफेस। सो ये पॉइंट भी आप लोग नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अटैचमेंट में, कि लेटरल सरफेस, lateral surface, you already know it is present between, it is present between anterior and interosseous borders, anterior and interosseous borders, right? And remember, on this lateral surface we have a muscle that is attached, that is called as tibialis anterior muscle. Okay, it is called as the yes, everyone is right. Chirag, Riya, Ash, very good. Tibialis anterior muscle, and it is arising from upper 1/3. Okay, arises from upper 1/3, arises from upper 1/3. तो लेटरल सरफेस हो गया, पोस्टीरियर सरफेस पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है, मीडियल सरफेस हो गया। तो तीनों सरफेस पे जो जो मसल अटैचमेंट्स थी मैंने सारी बता दी है। आई होप द शाफ्ट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। I hope the shaft is clear to each one of you बेटा। I hope the shaft is clear to each one of you। मैंने सारा lateral surface, medial surface, tibial tuberosity, soleal line, vertical line सब बता दिया, ठीक है। Yes, हर्ष, रिया, आश, वेरी गुड। जब बोन से प्रैक्टिस करोगे और धीरे धीरे सीखते जाओगे बेटा, आज थोड़ा बहुत भी आता है, 60% भी लेकर जाओगे तो इट विल बी way good. Okay, so we have discussed the upper end and the shaft. Now coming on to the lower end. Lower end is like very easy, nothing much to discuss in the lower end beta. Lower end, okay, so remember beta, it has 5 surfaces, it has 5 surfaces and one process, and one process। अच्छा, सरफेस के नाम बता दो फटाफट से, चैट बॉक्स के अंदर सरफेस के नाम बता दो फटाफट से, चैट बॉक्स के अंदर सरफेस के नाम बता दो। एंड वन प्रोसेस बेटा, इट इज द मीडियल मेल्यूलस, इट इज द मीडियल मेल्यूलस, इट इज द मीडियल मेल्यूलस। यस, यू ऑलरेडी नो बेटा, ये एंटीरियर व्यू है, ये एंटीरियर व्यू है, और ये पोस्टीरियर व्यू है। तो एंटीरियर व्यू में मीडियल साइड ये हो गई, लेटरल साइड ये हो गई, और पोस्टीरियर व्यू में यू ऑलरेडी नो क्या कहते हैं, मीडियल साइड ये हो जाएगी और लेटरल साइड ये हो जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो मेल्यूलस है, देखो मेल्यूलस मतलब प्रोजेक्शन ऑफ द बोन विच इज कमिंग आउट, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, मीडियल साइड पे ही प्रेजेंट होती है। सो इट इज ऑलवेज प्रेजेंट मीडियली, ऑलवेज प्रेजेंट मीडियली, राइट, प्रोजेक्शन ऑफ द बोन। अब एंटीरियर व्यू में आगे की तरफ क्या हो सकता है, एंटीरियर सरफेस हो सकता है पहला, तो बिल्कुल ठीक है तुम्हारा चिराग, वेरी गुड। वी हैव एंटीरियर सरफेस, वी हैव एंटीरियर सरफेस। दूसरा सरफेस बेटा पीछे की तरफ होगा, ये देखो सरफेस पीछे की तरफ होगा, वी हैव द पोस्टीरियर सरफेस, वेरी गुड चिराग, इट इज पोस्टीरियर सरफेस। ओके, तीसरा वेरी गुड, इट इज मीडियल, मीडियल साइड पे होगा, लेटरल साइड पे होगा, तो मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस। ऊपर कैसे हो सकता है बेटा, ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, ऊपर तो शाफ्ट है, ऊपर तो कोई सरफेस नहीं है। मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस, और एक सरफेस बेटा नीचे की तरफ होगा,
और उसको हम लोग बोलते हैं inferior surface. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Inferior surface. So lower end has 5 surface. Superior to beta, it is continuation with the shaft only. No? It is in continuation with the shaft only. So we have 5 surface and 1 process. We have 5 surface and 1 process. So yes, I just wanted to discuss over this beta. Now you have to remember beta. Yes, posterior surface has a groove for tendon. Okay, एक गड्ढा देखने को मिलता है posterior surface में. So remember beta, posterior surface basically has a groove for tendon. Groove for tendon. Groove मतलब गड्ढा देखने को मिलता है for a tendon. Remember, it is the tendon name is flexor hallucis longus. Flexor hallucis longus. Okay, tendon. Obviously, muscle है, muscle का ही tendon है, which will attach over this groove. Okay. Yes, the medial surface beta will project downwards. The medial surface will project downwards, forming the medial malleolus. Okay, the medial malleolus, you already know. The medial surface, it is forming the medial malleolus, right? Which will give, yeah, which will present with 2 grooves on its back. 2 grooves देखने को मिलते हैं medial malleolus पर. So yes, if we talk about medial malleolus will consist of 2 grooves. 2 grooves will be present. Okay, 2 grooves will be present beta. Yes, for 2 muscles. For 2 muscles, remember we have tibialis posterior, and flexor digitorum longus. Flexor digitorum longus. Okay, we have tibialis posterior and flexor digitorum longus. Okay. Now lateral surface will actually be the medial surface for the body of the talus, right? And yes, the lateral surface, yes, will consist of, yeah. Okay, everyone can see over here? This is the lateral side. So there is a notch which is present beta, and this notch, it is called as the fibular notch. This notch, it is called as the fibular notch. Medial malleolus, posterior surface. Okay. Just don't forget to mention posterior surface, and fibular notch, it is present on the lateral surface. Fibular notch. Fibular notch. Fibular notch. So yes, inferior surface. The inferior surface beta, it will articulate, okay, with body of talus. With body of talus, and you already know it will form the ankle joint. It will form the ankle joint. It will articulate with the body of the talus, which will form the ankle joint, right? So that is about the lower end. In one slide, I have just concised all the information. So yes, I hope this is clear to everyone. Beta, just give me a thumbs up in the chat box if it's clear to each and everyone. Yeah, just give me a thumbs up in the chat box if it is clear to each and everyone. Yeah. So now coming on to the ossification beta. Ash, very good beta. Very good. Chirag, very good. Yeah. Coming on to the ossification, basically we have one primary center, and we have 2 secondary center. One primary center is for the shaft, and 2 secondary center, it is for upper end, and one for the lower end. Okay, so we have one primary center that is obviously it is present in the shaft region, and we have 2 secondary centers beta, one for the upper end and one for the lower end. Okay, now coming on to the last part of today's lecture, that is the clinical correlation.
Okay, that is the clinical correlations. Clinical correlations, beta. The first one that you have to remember. The first one you have to remember. Okay, the upper end of tibia. Okay, if we specifically talk about the upper end, it is more prone to infection. Okay, it is the common site for. Okay, it is the common site for infection, and that infection of the bone, it is like acute osteomyelitis. Acute osteomyelitis. Itis का मतलब ही क्या होता है? Inflammation, right? Inflammation. Common site for acute osteomyelitis. Okay. And remember, beta, the second point that you have to remember, it is the tibial fracture. Tibial fracture, which is like most common. Okay. It is fractured at junction of upper two-third. Okay. At junction of upper two-third and lower one-third of shaft. Lower one-third of the shaft. If suppose this is a bone, so yes, upper two-third. So this is the junction. This is the junction. Upper two-third and lower one-third of the shaft. Junction of the upper two-third and lower one-third of the shaft. That is the most common site for the tibial fracture. That is the most common site for the tibial fracture. So that ends up with today's topic. That ends up with today's topic, that is osteology of tibia. But I have discussed the type, site, function, the joints that tibia is forming superiorly, inferiorly, and laterally. I have already discussed the right and left, how to determine the right and left in case of tibia. Right, the structure, upper end, I have already discussed about the medial condyle, the lateral condyle, and the tibial tuberosity. And obviously the medial condyle and the lateral condyle, the superior surface of medial and lateral condyle basically presents with a intercondylar area. Okay, and that we have the intercondylar eminence. So obviously various ligaments are attached over there. Right, I have already shown you the superior view, and I have drawn a diagram for that also with all the attachments. Apart from that, the lateral condyle done, yeah, intercondylar area done. Then coming on to the shaft, obviously we have three borders and three surfaces. I have drawn diagram for that also, right? I've drawn a diagram for that also, and obviously all the attachments on the posterior part I have shown you. And lower end, it is way easy, right? So yes, I hope it's clear for today. So just give me a thumbs up in the chat box if you all have written the notes along with me. Yes. Sure. Very good. Ria, very good. Chirag, very good. Sure. Harsh, very good. Very good, beta. Sure. Let's end the session for today. Yes.